हेलो। तो आज विल स्टडी दिस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, स्पेशली बोथ प्रेस्क्राइब आईएससी और सीबीएससी। उसमें जो स्पेसिमेंस पेपर है उससे विल सॉल्व सम क्वेश्चंस, important types of concepts. Okay, because relation and function, this carries 10 to 12 marks, so 10 marks. Okay, probably 2 plus 4 from the trigonometric functions, so it is a very important topic for board as well as entrance. So let's see what the specimen paper, स्पेसिमेन पेपर में क्या है बेसिकली। तो ऐसे तो पेपर सॉल्व कर ही रहे हैं और प्रैक्टिस करते करते, और when we do more practice, so this type of questions will be familiar. So the first question, that is, okay, so it is very small one, tan inverse, okay, 6 by 10, I guess. Yes. So that means totally formula based. Plus tan inverse 8 by 10. You have to simplify this and then change it into tan and then sine. So tan inverse x plus tan inverse y, that is equals to tan inverse x plus y by 1 minus xy. Okay, we'll use this formula. So tan inverse 6 by 10 plus 8 by 10, 6 by 10 into 8 by 10. So that is tan inverse 40 by 10, 6 plus 8, 14, and this is 100 minus 100 minus 48, I guess. So that is tan inverse 14 by 10 into, this is 52 by 100, so 100 divided by 52, 10, 0. So basically it is tan inverse 70 divided by 26. Okay, and you can easily cancel out again, so that is 35 and this is 30. Normal basic trigonometry, okay, we'll use in for tan inverse. Normal basic trigonometry. So suppose this one came as tan inverse 35 divided by 30, right? Now suppose you have to prove that whether it is sine inverse something or not. How will you prove? See, class 10 method. So tan means, suppose theta is tan inverse y by x. How will you write? So this inverse, so tan theta will be y by x, that is perpendicular by base, right? If this is the theta, that means 35 is the perpendicular and base is basically 13. From Pythagoras you can easily calculate this one, 35 square minus 13 square, I guess. तो इससे क्या होगा? Now what will be your sin theta?
sin theta is perpendicular by hypotenuse, or suppose cos theta you have to calculate, b is by hypotenuse. Now theta, sin theta will be p by h. P is 35 and h is this one, whatever it is, you will calculate 35 square minus 13 square. So here also theta is sin inverse 35 by root over this. Okay, 35 square minus 13 square. This is theta and this is also theta. So that means instead of tan inverse, you can write down this also. Tan inverse 35 and sin inverse this 35 by root over something will be same. उसके साथ cos inverse भी same ही होगा. Okay, this is how we'll convert the different inverse trigonometric functions. Using the cluster method. Now do a long question. Sin inverse x, sin inverse this. You have to find out x. Acha, see the second question. Specimen paper questions from the book. Sin inverse x plus cos inverse 1 minus x, that is equals to this is not cos inverse, this is again sin inverse. Okay, this is also sin inverse and this is cos inverse x. Okay, yes, you have to calculate x. What will be your x? How? See, first of all you have to understand that ये तुम्हें समझना है कि sin inverse x plus cos inverse x that is equals to pi by 2. ये formula will use. कैसे? Suppose देखो, let theta equals to sin inverse x. So तुम्हारा sin theta क्या हुआ? Suppose assume that sin inverse is 1 by sin, so cross multiply, but it is not. It is just an inverse trigonometric function. Okay, so sin theta is x. Now if you change the sin theta into cos, what will you write? Pi by 2 minus theta. Okay, cos pi by 2 minus theta is actually sin. So this is your x. Now what will I do? I will calculate pi by 2 minus theta from here. So that is cos inverse x. See this. Now what will be your sin inverse x plus, we'll use this formula. Okay, sin inverse x plus cos inverse x. See, sin inverse x we assume theta and cos inverse x becomes pi, from that pi by 2 minus theta. So theta cancel out, so it is pi by 2. Similarly we can prove that tan inverse x plus cot inverse x within its principal range, it will be tan inverse x plus cot inverse x is pi by 2, sec inverse x plus cosec inverse is pi by 2. So this is the proof. We'll use this formula. Understood? समझ गए ना? बहुत ही आसान है. Now what will I do? That sin inverse x, okay, plus so sin inverse 1 minus x can be written as pi by 2 minus cos inverse x, or just replace this one, that sin inverse 1 minus x is equal to cos inverse. Cos can be written in this way, pi by 2 minus sin inverse x, right? Because sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2.
So what will be cos inverse x? Pi by 2 minus sin inverse x, and this sin inverse x in when you जब side change करोगे तो this will be, this is for this, and this sin inverse x I change the side. So sin inverse 1 minus x is basically pi by 2 minus 2 sin inverse x, right? Now, so 1 minus x equals to sine, if you give sine on both sides, pi by 2 minus 2 sine inverse x. Alright. Understand? Because sine inverse x plus cos inverse x is pi by 2. So instead of pi cos inverse x के जगह you can write pi by 2 minus sine inverse x. और इस तरफ ये साइन इनवर्स मैंने उस तरफ कर दिया. सो साइन पाई बाई 2 मीन्स 90. साइन 90 माइनस सपोज दिस इज थीटा. साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? सो दैट इज कॉस थीटा. सो 2 साइन इनवर्स एक्स. अंडरस्टूड? नो. साइन पाई बाई 2. सपोज दिस वन इज एंटायरली थीटा. सो दैट इज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा. क्लास 10 में क्या करते थे? सो दैट इज कॉस थीटा. यू राइट कॉस थीटा, राइट? सो कॉस थीटा मीन्स दिस. Now 1 minus x, you have to calculate x. Now 2 sin inverse x. Now we have to change the 2 sin inverse x as cos inverse x. See, let 2 sin inverse x let sin inverse x is equal to theta. So x is sin theta. What will be cos theta? Say cos theta क्या होगा? रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1. So 1 minus x square. Okay. Now what is sin 2 theta formula? It is totally based on class 11 trigonometry. So 2 sin theta is x and this 1 minus x square. So this will be 2 theta equals to sin inverse 2x root over 1 minus x square. Okay. Now theta is 2 sin inverse x. Okay. Now what will be cos theta, by the way? If you cos 2 theta, that is in terms of sin theta, that is 1 minus 2 sin square theta, right? Cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta. 1 minus sin theta is x. So 2x square. That is cos 2 theta. So 2 theta will be cos inverse 1 minus 2x square. Understood? So theta is sin inverse x. So instead of 2 sin inverse x is actually cos inverse 1 minus 2x square. This I will use this thing. मुझे ये रिप्लेस करना है. See, 1 minus x is cos 2 sin inverse x. तो अब देखो मैं क्या करता हूँ. 1 minus x cos ही रहा. Now 2 sin inverse x के जगह we can write this cos inverse 1 minus 2x square. See, this one cancel out. So 1 minus x is 1 minus 2x square. So 1 cancel out. 2x square minus x equals to 0. X common. 2x minus 1 equals to 0. So x equals to 0 or 2x minus 1 equals to 0. So x equals to half or 0. Now
which 0 or half इनमें से both of them will satisfy the given equation or not? Check. If it is not, otherwise the solution will be, your solution sets will be x equals to 0 or half. For both the value, this equation, the given equation will be solved. थोड़ा सा complicated था, but still it is manageable. You have to remember the basic trigonometry. See, sin inverse left sin inverse x is theta. So x क्या होगा? Sin theta. It will be sin theta. Now cos theta calculate करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ता. Suppose you don't want to calculate the cos theta. If you want to convert the two sin inverse x in sin, because in इसके पहले cos है, so we'll convert it into cos inverse something. ताकि cos और cos inverse cancel हो जाए. That is our aim. ये मेरा aim है. ठीक है? Cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta. Remember, multiple angle formula. ठीक है? ऐसे करके ये करते हैं. And then we'll substitute this thing. थोड़ा थोड़ा trigonometry यहाँ पे जरूरत पड़ेगा. Basic 11 level trigonometry. ठीक है? ये भी थोड़ा बिठा देना. cos 2 theta क्या हो रहा है? That is cos square theta minus sin square theta, right? Now change the cos square theta is 1 minus sin square theta. Very simple, minus sin square theta. तो देखो क्या हो रहा है? sin square theta दोनों ही नेगेटिव, so 1 minus 2 sin square theta is cos 2 theta. cos 2 theta का जगह ये लिख सकते हो, और ये x assume किया था, so 1 minus 2x square is there. यहाँ से 2 theta will be what? Cos inverse. Cos अगर इस तरफ, so if you convert that 1 minus, so यहाँ पे x square कर सकते हो, क्योंकि we assume that sin theta is x. बस तो मतलब हुआ ना, थीटा तो तुम्हारा sin inverse x ही था, तो 2 sin inverse x के जगह तुम ये भी लिख सकते हो, cos inverse 1 minus 2x square. We'll do the different ये relations. अभी एग्जाम टाइम में सीरियस स्टडीज होगा, उसके बाद बातचीत भी होगा बहुत सारे. अच्छा, इफ एनी अदर सैम्पल पेपर क्वेश्चंस? नो सैम्पल पेपर वन. अच्छा, now 2023 में there is one question. It's minus 1, 27, 23, 36. It is 2023 question. Okay. So tan inverse x minus 1 by x plus 1 plus tan inverse 2x minus 1 by 2x plus 1 is equal to tan inverse 23 by 36. Similar types. 23 by 36. Now how will you do solve? Simple. This is, suppose, assume tan inverse, this is x, this is tan inverse y. These things are different, coefficient is different, so these are two different ones. So tan inverse, this is x, suppose this is tan a b, a plus b 1 minus ab.
So this is x minus 1 LCM, simple. X minus 1 into 2x plus 1 by plus x plus 1 2x minus 1. X plus 1, this LCM, denominator LCM. This one cancel out. This is equals to tan inverse 23 by 36. Okay. Now just erasing that. देखो क्या हो रहा है. So this is your tan inverse. This one. You have to multiply this thing only. क्योंकि denominator तो vanish हो गया. So x minus 1 into 2x plus 1. So that is 2x square plus x minus 2. So that is minus x minus 1 plus just 2x square minus x plus 2x. So plus x, I guess. Yes. Minus 1 divided by this 2x square plus 3x plus 1 minus 2x square minus 3x plus 1. Okay, just do the cross multiplication करना है सर. वो नहीं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ऐसे बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं रहता है. देखो 4x स्क्वायर x तो कैंसिल आउट हुआ, -1 सो -2, और यहाँ पे 2x स्क्वायर सो 6x से 6x होगा, राइट. समझे? ये देखो ब्रैकेट ओपन करो. 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस x प्लस x कैंसिल आउट, -1 -2. अच्छा, ब्रैकेट ओपन 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. 3x माइनस और माइनस प्लस, तो 3x 6x प्लस 1, और ये ब्रैकेट ओपन करके -1 6x. सो tan इनवर्स और थोड़ा छोटा कर देते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई 3x, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 23 by 36. tan दोनों तरफ वैनिश कर सकते हो. So 2x स्क्वायर माइनस 1 by 3x इक्वल्स टू 23 by 36. 3 से कैंसिल कर दो, 12. और कुछ है नहीं. So 12 2x स्क्वायर, यही तुम्हें प्रूफ करना है. दैट इज इक्वल्स टू 23x या 24x square. This is 23 version. minus 23x, इसको इस तरफ चेंज कर, -12 इक्वल्स टू 0. ये हाँ, यही प्रूफ करना था. Okay, 24x square, prove that 24x square minus 23x minus 12 equals to 0. They don't want to calculate x. अगर तुम calculate x करना है तो x भी कर सकते हो. क्या है, क्वाड्रेटिक करो या सीधा रचरिया करो, ठीक, ऐसे करके करना है. एक चीज में यहाँ पे थोड़ा सा आई डोंट वांट टू, ये तो बहुत ही बेसिक का ये है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है. व्हेनेवर यू सी दोनों तरफ इट इज बेटर. देखो tan इनवर्स मैंने क्या यूज किया, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स A प्लस B बाई 1 माइनस AB. हाउ?
कैसे? कैसे बता सकते हो? देख अच्छे से सुनना। हाँ देखो, लेट दिस इज इक्वल्स टू सपोज अल्फा एंड दिस इज सपोज बीटा। ओके, एज्यूम लेट, तो तुम्हारा tan इनवर्स अगर a अल्फा होता है, सो a विल बी tan अल्फा, और tan इनवर्स b अगर बीटा होता है, सो व्हाट विल बी योर b, दैट इज tan बीटा, राइट? यहाँ तक तो समझे? अच्छा, नाउ सिंपल एक क्लास 10 का फॉर्मूला यूज करो कि व्हाट विल बी tan अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, कॉम्पाउंड एंगल फॉर्मूला। अच्छा देखो, तो tan अल्फा की जगह क्या आया था? a, यहाँ की जगह b, और यहाँ 1 माइनस a इंटू बी, दिस इज tan अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? tan को तुम इस तरफ करोगे, यू चेंज द साइड, सो दैट इज, तुम ऐसे तो नहीं लिख सकते, इट हैज नो मीनिंग, राइट? इट हैज नो मीनिंग। 1 बाई tan को वी कन्वर्ट, वी राइट इन मैथमेटिक्स tan इनवर्स फंक्शन, सो दैट इज a प्लस b बाई 1ab। नाउ अल्फा बीटा क्या एज्यूम किए थे कि tan इनवर्स इट इज a प्लस tan इनवर्स b, अंडरस्टैंड? सो दिस इज इक्वल्स टू दिस, ऐसे यही मैंने यूज किया है। ये हमें कितना ज्यादा टफ है देखो, बट मेंटली कैलकुलेशन के लिए तुम tan इनवर्स मतलब ये एज्यूम करते हो, कभी लिखना मत, क्योंकि 1 बाई tan हैज नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है यूनिवर्सली। तो दिस इज प्रूफ। वैसे ही tan इनवर्स तुम्हारा ये क्या होगा? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, सपोज दैट इज इक्वल्स टू ये होमवर्क, a माइनस b, सेम मेथड, इसको अल्फा तुम ये करोगे tan अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा इज व्हाट? tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 plus tan alpha tan beta. If you assume this as alpha and this as beta, तो a और b की जगह tan alpha की जगह क्या करोगे? a and b, ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। सिर्फ assume करो कि this is equals to alpha and this is equals to beta, ये assume करो, और ये alpha minus beta की, so that is equals to tan inverse, और alpha beta की जगह ये पुट कर देना जो तुमने assume किया 1 प्लस a। हाँ, बहुत आसान है प्रूफ, इतना कुछ टफ नहीं है। हाँ, इसका थोड़ा थोड़ा ये मैंने प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर लिया है, जो माइनस इन्फिनिटी के tan थीटा इज इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इस इंटरवल में लिया है मैंने। कुछ अलग इंटरवल में कुछ अलग अलग फॉर्मूला इसके साथ पाई एड अप ये भी होता है, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर, वो विल डिस्कस दैट इन लैटर। तो ये सब प्रूफ थोड़ा करना चाहिए, लाइक साइन इनवर्स, सब क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है, जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए क्या बोलना चाह रहा था? थैंक यू। थैंक यू ऑल, ये बोलना चाहता हूँ। और ठीक है, सी, फिर मिलेंगे। ओके।